Hello students, now in the skewness of frequency distribution chapter number 5, let's today solve section C of final exercise 5 on page number 210 in the textbook. Now let's solve first of all sum number 5, that for a frequency distribution skewness Sk is equals to minus 2.8, if its mode is 48.8, find mean. All these are short sums. So here skewness minus 2.8, mode 48.8. Now here mean is given to find out. So now let's write down formula of skewness. There is a one short formula for the skewness for the short sum is there, that skewness is equals to mean minus mode. Skewness value is given, mode is given, right? इसको इधर transfer किया, so we get x bar is equals to 46. This is so easy. Sum number 6 now. Now let's read the sum. That sum of two extreme quartiles is 138. Extreme quartile, that means Q3 and Q1. In a symmetric frequency distribution, find its median. So there is one formula, Q3 दिया है, Q1 दिया है, median find out करने को दिया है, तो ये formula हम apply करें, Q3 plus Q1 minus 2 median, right? ये वो वाली बाउलीज मेथड की फॉर्मूला है. बाउलीज में वो था Q3 प्लस Q1 माइनस 2 माइनस, ये माइनस है एक, दैट Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन 0. माइनस 2 मीडियन को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, सो इट बिकम्स प्लस. तो ये फॉर्मूला बन जाएगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन. Why we have to transfer this minus 2 median on this right side? Because we have to find out median, and value of median is not given, and value of this quartiles that is given. So two extreme quartiles value, that is 138. So Q3 plus Q1, that is 138. Now transfer this 2 in the denominator, median. So 138 upon 2 becomes 69. So median is 69. Sum number 7 now. The coefficient of skewed frequency distribution is 0.75 if standard deviation is 20 and mean is 37.5. Find median. Now see that here coefficient of skewness 0.75 is given, standard deviation 20 is given, mean 37.5 is given. We have to find out median. ये सारी values ये वाली formula में आती है. So we write down this formula of skewness, that J coefficient of skewness, J is equals to, because J is given, so we have to take formula of coefficient of skewness. J is equals to 3 in bracket x bar minus median upon standard deviation. Put up all values, simplify this, and we get median 32.5. Sum number 8 now. The mean of skewed frequency exceeds its median by 3. If its coefficient of skewness is 0.75, find standard deviation. Now see, here it is given that the mean is exceeds its median by 3. तो mean median से 3 ज़्यादा है, तो mean is equals to median plus 3, right? And J is equals to 0.75, and we have to find a standard deviation. J and standard deviation दोनों ये वाली formula में आते हैं. So we take this formula, right? Here J is given, standard deviation is given to find out. This value is also not given. So with the one value we cannot find out any answer. So what we do, we have this equation, right? So इसको थोड़ा सा हम split कर देंगे, तो मीडियन हम ये लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो x बार माइनस m बिकम्स 3. तो ये हो जाएगा ये वाली वैल्यू, राइट? x बार माइनस m. So now we put up values. J is equals to 0.75 is given, 3 in bracket 3. X bar minus m becomes 3 now. So 3 upon standard deviation. So now simplify this. So S we get 12. Sum number 9. If a frequency distribution has Q3 minus Q2 is equals to 2 in bracket Q2 minus Q1, find J. Here this equation is given. J is given to find out.
Because of this equation we take Bowley's coefficient of skewness, that first formula जो हमने वो पहले देखी थी वो टेक्स्ट बुक में. So we take this formula. See, on page number 197 it is given that, so take this formula, right? Now see here, median is given Q3 minus median, and here in the sum it is Q2 is given, but median itself is a Q2, right? Median means Q2 only. So Q3 minus Q2 minus Q1, that is this, that Bowley's coefficient of skewness formula वो लिखी है. Now we have Q3 minus Q2 is equals to 2 in bracket Q2 minus Q1. तो इसकी जगह पे हम ये रख दे, राइट, दोनों में ये दोनों की वैल्यू ये रख दे, तो ये लिख दिया, राइट. अभी ये 2Q2 माइनस Q1 है, उसमें से 1Q2 माइनस Q1 लेस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, Q2 माइनस Q1. फिर इन द डिनोमिनेटर 2Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1, तो ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो ये 3Q2 माइनस Q1. सो नाउ ये Q2 माइनस Q1 ये एलिमिनेट हो जाएगा, सो रह जाएगा सिर्फ 1/3. 1/3 को आप 1/3 you can keep this 1/3 as it is, or you can convert this into the decimal point, तो ये हो जाएगा 0.33, right? Okay. Sum number 10 now, that if a frequency distribution has skewness Sk is equals to minus 6.6 and quartile deviation 22, find J. Skewness minus 0.6 is given and quartile deviation 22 is given. J is given to find out. J की फॉर्मूला ये है, राइट, क्वार्टाइल डेविएशन. ये क्वार्टाइल डेविएशन इसलिए हम बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस लेंगे. नाउ क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन, सो क्वार्टाइल डेविएशन के हम फॉर्मूला लिखेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बिकम इज इक्वल्स टू 22. ये 2 को हमने इधर ट्रांसफ़र करके मल्टीप्लाई कर दिया तो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 44 हो जाएगा, राइट. अभी ये स्कीवनेस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बाउली स्कीवनेस, तो ये है, तो Q3 माइनस Q1 की वैल्यू मिल गई 44. मीडियन दैट इज़ नॉट गिवन टू फाइंड आउट, तो हमें इसकी तो वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. बाउलीज का फॉर्मूला स्कीवनेस इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन. स्कीवनेस माइनस 6.6 इज गिवन. इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो कीप दिस एज इट इज. नाउ वी राइट डाउन बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 6.6. सो पुट अप माइनस 6.6 अपॉन Q3 माइनस Q1, तो ये 44, अपॉन 44, तो कन्वर्ट दिस इनटू द डेसिमल पॉइंट, सो आ जाएगा J इज इक्वल्स टू माइनस 0.15. 11th sum, that is a skewed frequency distribution has mean 40, mode 46, Q3 plus Q1 76 and Q3 minus Q1 20. Find Bowley's coefficient of skewness. नाउ सी बाउली का दिया है तो ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे. अभी हम ये चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू दी है. मीन दिया है, मोड दिया है Q3 प्लस Q1, ये दिया है 76. दिस वन इज़ नॉट गिवन एंड J इज़ गिवन टू फाइंड आउट, राइट. तो हम कोई तो वैल्यू फाइंड आउट करें फर्स्ट ऑफ ऑल. सो Q3 माइनस Q1 दैट इज़ 20, दैट इज़ ऑल्सो गिवन, राइट. तो इसकी वैल्यू दी है Q3 प्लस Q1 दैट इज़ गिवन, Q3 माइनस Q1 दैट इज़ ऑल्सो गिवन, बट मीडियन इज़ नॉट गिवन, सो वी फाइंड आउट मीडियन. मीडियन किस शॉर्ट फार्मूला में आएगा, मोड दिया है, एक्स बार दिया है, तो मोड इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार. सो 46 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 इंटू 40. तो सिंप्लीफाई दिस करो. इफ यू सिंप्लीफाई दिस देन वी गेट मीडियन इज इक्वल्स टू 42. So now put up 42 in place of median, simplify this and J we will get minus 0.4. This is again easy. If you know the formula, all these short sums are very easy. Sum number 12, that is theory questions. So sum number 13, the 3 quartiles of a frequency distribution are 76, 98 and 40.
Find J and state the types of the skewness. Now see here, J दिया है find out करने को. So we apply this formula, Bowley's coefficient, because here quartile is given. So quartile 1, that is 40. Now see how we take here 76, 98 and 40. 76, 98 and 43 values are given. So highest that we take as quartile 3, right? इसके बाद का lowest that we take as quartile 2 and last lowest that we take as quartile 1. So put up values in this formula and find out answer. Sum number 14 now, the coefficient of skewness of a frequency distribution is 0.85 if its mean is 3.4 more than its mode, find its variance. Here J is equals to 0.85 is given, mean is given. मीन के लिए स्टेटमेंट दिया है 3.4 मोर देन द मोड, सो मोड प्लस 3.4 and variance is given to find out, that means S square is given to find out. Now we put a formula of J x bar minus mode upon S. This is the Kyle-Pearson's formula. Why? Because here mode is given, mean is given, right? So J, that is 0.85, x bar minus mode. In place of x bar we put up this equation, mode plus 3.4, तो ये पुटअप कर दिया माइनस मोड, मोड कैंसल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और ये 85 को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया. सो 3.4 अपॉन 0.85, राइट, इसको डिवाइड किया था 4 आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एस स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 4 आ जाएगा 16. सो 16 दैट इज आवर आंसर. Last sum, if a frequency distribution has x bar plus mode is equals to 82, x bar is equals to 44 and standard deviation 12, find coefficient of skewness. X bar plus mode is given 82, mean 44, standard deviation 12 is given. ये सारी वैल्यू ये वाली फॉर्मूला में आएगा x bar minus mode upon s, right? X bar we have, mode we do not have, so now we find out mode. मोड के लिए ये इक्वेशन दिया है, मीन प्लस मोड इज इक्वल्स टू 2, मीन 44 इज गिवन, मीन प्लस मोड इज इक्वल्स टू 82, 44 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, सो 82 माइनस 44, सो मोड इज इक्वल्स टू 38, सो 44 माइनस 38, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 12, सो 6 अपॉन 12 कम्स 0.5, so J is equals to 0.5. So this is how we can solve section C. Short sums are very easy if you know the formula. Just put up the formulas and find out the answer. So write down this section C in your notebook. Do try to solve all these sums by yourself, right? So that's all for today.